Hi friends, my name is Ravi Sharma and today we are going to learn about the input and print function in Python. The input function in Python is used to accept the value for a variable from the user. To input integer and float value, you can use int or float with along with the input function. So friends, in we use input command to accept value for a variable from the user thing, and इसमें by default ये string value लेता है. If you want to enter integer or float value, आपको enter करनी है integer value और decimals, so आपको int और float लेना पड़ेगा along with the input function. The input function in Python allows for user input, typically returning the input as a string. So now learn about print. The print function is used to print a message or a value. It converts the message or an object into a string before writing it on the screen. Friends, इस चीज का आपको याद रखना है particularly कि जो हमारा string value प्रिंट कमांड है, प्रिंट कमांड में अगर आप कुछ भी राइट करोगे तो वो उसको स्क्रीन पे राइट करने से पहले उसे स्ट्रिंग के डाटा टाइप में कन्वर्ट करेगा. एंड हियर वी हैव द फर्स्ट एग्जांपल टू राइटिंग string input. So you can see name is equal to input, enter your name, and in print you can see this line and then in quotes and then comma, and you are writing name. Name is here a variable so it will not print name because it is not in quotes. The line in quotes is printed as it is, and the output will be, first it will ask name, so it will print enter your name, and like here I have entered name as Ravish, so it will print your name is Ravish. तो फ्रेंड्स इसको आपको याद रखना है. आप अगर वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो वेरिएबल आपको कभी भी कोट्स में नहीं लिखना है. अगर आप कोट्स में लिखेंगे तो उसे एज इट इज प्रिंट करेगा. अगर आपको वेरिएबल में वैल्यू प्रिंट करनी है तो वो हमेशा कोट्स में नहीं रहेगा. एंड हियर वी हैव द फर्स्ट एग्जांपल टू टेक string input. So in this example we have three variables as a, b, c, and c is equal to a plus b. So here we are trying to add two variables, two numbers, and here, as you can see in output, first I have entered a as 10 and b as 20, and because we are adding this, so output should be 30, but it will not print 30 because input function take string always, and we cannot add two strings. It will just place the numbers before and after each other, and the answer will be 10, 20, which is a totally wrong output. So in next example we will learn to enter int value. And now we have another example to add the values, and here you can see we have some little changes. So in this program, as you can see, in a and b we are writing a data type as int to enter integer value. And this is the example to add two integer values, and we are using int method to add the values. And in this output you can see that a is equal to 10, b is equal to 20, and because this is int method is used, it is adding the values, and the output is 30. तो अब आप देख सकते हैं कि ये इंटीजर कि अब हमने इंट लिया है
तो a और b अब ये दोनों इंटीजर हैं और ये दो इंटीजर को जोड़ सकता है। जब हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा था तो हमने इंट का यूज नहीं किया था, a और b दोनों स्ट्रिंग थे और हम दो स्ट्रिंग्स को कभी भी करेक्टली ऐड नहीं कर सकते। और तो अगर हमको इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए तो हमें इंट को यूज करना ही पड़ेगा, और क्योंकि ये अब इंट है तो ये इंट को जोड़ सकता है और इंट को और 10 और 20 को जोड़ के ये 30 आंसर देगा जो करेक्ट आउटपुट है। सो एंड हियर इज द सेकंड एग्जांपल जिसमें हम दो डेसिमल वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। सो इसमें भी सेम है लास्ट वाले प्रोग्राम से, बट इसमें हमको एक चेंज करना है। हम इसमें इंट का यूज नहीं कर सकते अगर हमको डेसिमल टाइप की वैल्यूज चाहिए। अगर हमें डेसिमल वैल्यूज लेनी है तो हमें फ्लोट का यूज करना पड़ेगा। एंड तो हेयर हमने फ्लोट का यूज किया है, तो ए और बी दोनों में ही हमने डेसिमल वैल्यूज एंटर करी हैं, और क्योंकि फ्लोट में हम डेसिमल वैल्यूज एंटर कर सकते हैं इसलिए आंसर है 10.4 plus 20.5 is equal to 30.9, and it is also correct output. And now here is a recap of the things we have learned back in the recent programs. So number 1, input function is used to take the input from the user. ये हमने सीखा था कि input function से आप जो वैल्यू है वो यूजर से ले सकते हैं। Number 2, input should be started with small I. It is input, not input like this with capital I, because Python is a case sensitive language. ये important चीज है, Python एक काफी case sensitive language है और उसका एक रूल है, हमें functions को स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा, इसलिए इनपुट फंक्शन हमेशा स्मॉल आई से स्टार्ट होना चाहिए, नॉट विद कैपिटल। एंड इनपुट ऑलवेज टेक स्ट्रिंग, ये भी हमने सीखा कि इनपुट वैल्यू में इनपुट हमेशा वैल्यू को बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही लेगा, आपको या तो इंट या तो फ्लोट देना पड़ेगा वरना वो स्ट्रिंग लेगा बाय डिफॉल्ट। एंड ये बता रहा है नंबर 4, to take integer value from user we need to use int along with the input function, and to take float value from the user we need to use float along with the input function. फ्रेंड्स ये इनपुट और फ्लोट लेने का मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, जैसा हमने सीखा था लास्ट प्रोग्राम में। गुड बाय।